Okay, all of you please. In figure, angle BAC is 30 degrees, so that BC is equal to the radius of circumference of triangle ABC, whose center is O. Prove that angle BOC equal to twice angle BAC. Angle subtended at the center is double to remaining part of the circle. So angle BOC equal to 2 into 30 degree. It becomes 60 degree. Now in triangle BOC, OB equal to OC being a radii, so basis angle will same. Therefore, OBC equal to OCB. Now sum of three angle of a triangle equal to 180 degree. So OBC is 60 degree. Now this one is 60 degree. This one also is 60 degree. And this one is 60 degree. So this triangle is equilateral triangle. Therefore, OB equal to OC equal to BC. OB equal to OC equal to BC. Right? All of you write down. All of you write down. Okay? Completed. Okay. Now may I rub the board? Hello. May I? All of you tell me. May I rub the board? Hello. Okay. Now next question, dear student. Now question in figure, a line intersect two concentric circles. A line
intersect two concentric circle with center O at A, B, C and D. Prove that AB equal to CD. Here is two concentric circle. Center is O. A, B, C, D. Here is a question. In figure, a line intersect two concentric circle with center O at A, B, C and D. Prove that AB equal to yes. Very. Yes. Then ए से ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे ओ से ओपी. ड्रॉ कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ऑन एडी. जब एडी पर परपेंडिकुलर है तो बीसी पर भी परपेंडिकुलर होगा. राइट. नाउ प्रूफ. सिंस OP perpendicular AD, since OP perpendicular on AD, तो परपेंडिकुलर जब होता है तो कॉर्ड इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. सो कॉर्ड AD बाइसेक्ट. कॉर्ड AD बाइसेक्ट. Therefore, AP equal to PD. AP equal to PD. That is equation 1. Again, OP perpendicular on BC. OP perpendicular on BC. So, BP equal to PC, because OP bisect the chord BC. OP bisect the chord BC. OP bisect the chord BC. Subtract 2 from 1. Subtract 2 from 1. 1 क्या है? AP माइनस BP इक्वल टू PD माइनस PC. अब देखो AP में से BP को माइनस करेंगे, AB बचेगा. एंड PD में से PC को माइनस करेंगे, CD बचेगा. यही हमको प्रूफ करना था. प्रूव्ड. राइट डाउन.
बाइस कॉर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओपी जब परपेंडिकुलर होगा तो कॉर्ड को इक्वली दो पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। ओके, और बाई दोनों का कैरेक्टर निकाल करके इक्वेशन माइनस कर देंगे। राइट डाउन। कंप्लीटेड। केवल दो ही बच्चे बोल रहे हैं। वेट। प्रीति, फैज, आशुतोष, आदित्य, शिवानी, साल्वी, वैभव, पुष्कर, विश्वा भारती। राइट डाउन। राइट डाउन। Now may I rub the board? Okay. Now next. Okay. Now next question. Next question is that question in figure, if OA equal to 10 centimeter, AB equal to 16 centimeter, and OD is perpendicular to AB. OD is perpendicular to AB. Find the value of CD. Find the value of CD. Okay? Figure is this. This is a chord, center, radius,
10 cm. Okay, this is a perpendicular. Find the value of CD. Here in figure, OA equal to 10 centimeter, AB equal to 16 centimeter, OD is perpendicular. Okay, now AB is 16. It means chord bisect, perpendicular bisect the chord. 8 cm and 8 cm. Now we have to prove CD equal to what? अब हम पहले ये निकाल लें, उसके बाद माइनस कर देंगे. आंसर in triangle OCA, in triangle OCA, OC square equal to OA square minus AC square. OA is 10 square minus 8 square, that is 100 minus 64, it becomes 36. OC square is, that is OC equal to 6 cm. Now CD, here OD is radius. OD is radius. Therefore, OC plus CD equal to OD. Now OC is 6 cm plus CD. Radius is given 10 centimeter. Therefore, CD equal to 10 minus 6, that is 4 centimeter. The value of CD is 4 centimeter. Wait for others. All of you write down. If you are facing any problem, then please ask. Completed. Only 3 student is writing, not all. This is important question in board exam. That is a final exam. Okay. Now may I rub the board? Okay. Okay. पुष्कर, पावनी, पावनी, कल स्कूल में बोर्ड पर क्लियर नहीं था.
कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा। हाँ, घर पर थोड़ा सा अरेंजमेंट है इसलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। In figure, AB and CD are two equal chords. AB and CD are two equal chords of a circle with center O. What is the measure of angle AOB? What is the measure of angle AOB? What is the measure of angle AOB? And figure is two x plus 4 and this one is 4x minus 3 cm. 9y 9y minus 3x minus 1 and 5x plus 7y minus 5. Okay. अब देखिए, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो अपोजिट साइड का लेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल। अब देखिए, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकल अपोजिट एंगल। Okay, just wait, I am writing. 9y, okay. Then AB equal to CD. ये है एंगल आपको AOB, एंगल AOB इक्वल टू 9y minus 3x minus 1 and angle COD equal to 5x plus 7y minus 5. Now AB दिया हुआ है 2x plus 4, 2x plus 4 equal to 4x minus 3 ये दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या? x का वैल्यू निकाल लेंगे।
ये है 2x प्लस 3 ही लेके चलिए 3, तब हो जाएगा 2x माइनस 4x इक्वल टू -3 माइनस 2x इक्वल टू -6 x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. Okay, therefore angle AOB equal to 9y. अब y पहले हम लोग निकाल लें, y निकालेंगे तब होगा. नाउ एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD वर्टिकल अपोजिट एंगल, और AOB क्या है 9y माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 5x प्लस 7y माइनस 5. x के जगह 3, 9y माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 7y माइनस 5. 9y माइनस 7y इक्वल टू 15 माइनस 5 माइनस 9, तो प्लस 9 प्लस 1, देन 2y इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 10 cm. Therefore एंगल AOB है 9y माइनस 3x माइनस 1, 9 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, 90 माइनस 9 माइनस 1, दैट इज 90 माइनस 10. Therefore angle AOB equal to 80 degrees. This is the answer. Angle AOB equal to 80 degree. Write down please. Wait for others. All students please write down. Completed. Okay, now next question. May I rub the board? Dear student. Okay. Okay, now next question is okay, next topic will be